Hello everyone, I am Sonali Bhatia and welcome to Creative Edge YouTube channel. हमारी टॉपर स्टॉक सीरीज में आज एक और टॉपर, एक और अचीवर के साथ हम आए हैं जिसने यूसीड जो कि डिज़ाइन की सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है में ऑल इंडिया रैंक 15 अचीव की है। तो आइए बात करते हैं दीक्षांत दुपारे से जिन्होंने 2025 में ऑल इंडिया रैंक 15 अचीव की है। सुनते हैं उनसे कि इस जर्नी में क्या क्या हुआ। वेलकम दीक्षांत। Thank you, ma'am. I'm happy to be here. वेलकम दीक्षांत, जैसे ही रिजल्ट आया आई एम श्योर कि डिज़ाइन की सारी एग्जाम्स में यूसीड एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है जिसमें सिलेक्शन होना और इतना अच्छा रैंक आना वाज अ ड्रीम कम ट्रू। हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली रिएक्टेड टू इट? I was ecstatic. I was just overjoyed with, satisfaction and happiness. As you know, like रात के 12 बजे the result comes, and my dad was asleep, my mom was about to sleep. I was just checking the site again and again to see the result, and when it came, I was just in disbelief. And my parents were so happy, and I felt really satisfied. Yeah. Very nice. I'm sure there was a lot behind this journey और बहुत कुछ हुआ होगा पूरे साल भर के प्रिपरेशन में। सो आज हम चाहेंगे कि आप हमसे बहुत खुल के ये सब डिस्कस करें। आई एम श्योर चैनल पे ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी ये जर्नी से इंस्पायर होना चाहेंगे, मोटिवेट होना चाहेंगे, क्योंकि वो अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। सो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो वर बिगेस्ट चैलेंजेस इन दिस जर्नी ऑफ प्रिपरेशन एंड यू रियली फेस देम वेल। Well, the biggest challenge for me was to perfect my skills in general. I always felt I was good at drawing, and I felt that design is the thing for me. It's what I need to do. But still, the thing is we need to be really good at it and keep the practice going. Yes. And that was a very big thing for me because I gave UCD in 2024 also. I didn't get selected in that, and so I realized that practice is really, really important, and to keep that going consistently, that was a really big challenge for me. But I did that because I knew I had a goal to achieve. So yeah, that was a challenge. The Very consistency. Nice. I can see that this diligence, that discipline of working every day because it's an art form और हर आर्ट फॉर्म रियाज मांगता है, उसको रोज़ करना पड़ता है चाहे आप उसे करना चाहते हो उस दिन मूड है या नहीं है। तो आई कैन सी दैट इन योर केस ऑल्सो। जैसे आपने अभी बताया कि आपने यूसी 2024 में भी दी थी, एंड आई विल टेल द व्यूअर्स दैट यू विल कम टू नो कि ऑल इंडिया रैंक 800 प्लस से आज ऑल इंडिया रैंक 15 आ गए हैं दीक्षांत। तो ऐसा क्या बड़ा डिफरेंस था तब के और अब के प्रिपरेशन में दीक्षांत जो आप सोचते हैं वाज अ की चेंजर फॉर योर अचीवमेंट? Okay, so in 2024, I was also about to give my 12th graduation exam, and I was also preparing for JEE as I was a PACM student, so I felt that I needed to give that. So there was a lot going on. I'm not afraid to say that I was kind of overwhelmed by everything, but I did study for UCD, and I felt like it was the main thing for me to do at the time. So I studied for it by myself for 2 months. I prepared for it online through videos and stuff on the internet, and I gave it my all, but still it became short. So next year I joined this coaching institute because I felt like I needed mentorship. I couldn't do this just by myself. I needed people to guide me and to support me. So that's how much I think this answer will give direction to students who feel कि मेरी ड्राइंग अच्छी है तो मैं कर लूँगा। I am sure that ड्राइंग अच्छी होना will really help you score high. But competitive exams are such, I guess, जहाँ पे आपको feedbacks are very important. You need to work on what is going wrong, the lack areas. Yeah. So मुझे लगता है कि वो एक mentorship के अंडर, guidance के अंडर जो हो सकता है
वो आई थिंक वाइटल रोल प्ले करता है आपके अचीवमेंट में, एंड दैट वी कैन सी इन योर जर्नी फ्रॉम 800 प्लस टू ऑल इंडिया रैंक 15 वाज अमेजिंग. आपने ड्रॉप लिया लास्ट ईयर. आई एम श्योर फैमिली, फ्रेंड्स या आपका खुद का बहुत सारा डाउट रहा होगा कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, कमिंग फ्रॉम अ PCM बैकग्राउंड. Not taking drop for JEE but taking drop for UCEED was a big decision. I'm sure अभी भी ये वीडियो कुछ बच्चे देख रहे होंगे जो ड्रॉप ले ना लें का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. तो ड्रॉप लें और ले के क्या राइट करें, अगर इसके बारे में कुछ बता सकते, बिकॉज योर जर्नी इज एन एग्जाम्पल वेयर वी कैन सी दैट स्टूडेंट टुक अ ड्रॉप एंड वो उसके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा. सो टेल अस अबाउट इट, दैट अगर ड्रॉप लें तो क्या करें. Okay, so taking a drop for me was one of the pivotal decisions of my life ever. And what I felt was that I was really clear about the goal I needed to achieve. And obviously a lot of people were telling me that, you know, drop lene se ek saal piche ho jata hai, you know, people would go ahead of you, they would earn before you. And there's all these things, but one thing I had clear in my mind is that I knew I had the potential for it, and to give it one more year with all the focus I had would definitely be fruitful for me. Yes. That's the confidence I had. So I feel like if you're confident about what you want to do, then taking a drop is not a thing that needed to be doubted. You know, it could be the most fruitful thing to happen to you. Correct. जैसे बहुत सारे बच्चे IIT क्रैक करने के लिए ड्रॉप लेते हैं. मैं फिर से बता दूं जिन व्यूअर्स को नहीं पता है, UCEED जिस एग्ज़ाम की बात हो रही है इज़ द एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय IIT बॉम्बे फॉर डूइंग देयर बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री. बैचलर्स डिग्री फॉर UCEED एंड सीड होती है एग्ज़ाम मास्टर्स डिग्री के लिए इन डिज़ाइन. सो बैचलर्स इन डिज़ाइन एंड मास्टर्स इन डिज़ाइन भी IIT में होता है. क्या दीक्षांत ये पहले से पता था या किसी ने गाइड किया आपको कि IIT में भी डिज़ाइन पढ़ सकते हो? Well, I thought I was always good at drawing, so I needed to do a creative profession. But I didn't know about design, all these exams. But I have an elder brother, and he studied Bachelor in Design from IIT Guwahati. Oh. So he mentored me. He told me about this exam UCEED, and I should give it. So I was lucky to have him as a mentor and a supporter. Very nice, great. इस जर्नी में आई एम श्योर जो डे इन डे आउट आपने प्रैक्टिस करी वॉज इम्पॉर्टेंट. आप ड्राइंग में अच्छे थे, आपने हमें बताया पहले. क्या एप्टीट्यूड भी इतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? Aptitude is very important, I should say. It comes before drawing, because if you don't get qualified in part A, then the drawing doesn't matter, it doesn't get checked. So aptitude is as well very important, and you need to keep practice of it daily. Don't even miss a day, because it's very important and it could, you know, change your whole result. So aptitude, I did the practice of aptitude like every day since towards the exams. So the content given by the classes, teachers really helped you. कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने रूल बुक के जैसे फॉलो की कि ये तो मुझे करना ही है बाय हुक और क्रुक टू गेट थ्रू दिस. कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो व्यूअर्स आपसे पिक करके और फॉलो कर पाएं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो करनी ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स. Okay, so again, practice is very important, but one of the main things is to identify your weak spots and your strong suits, right? So when I gave UCEED in 2024, I scored 97 in aptitude, and so I was qualified for it, of course. But my drawing part was only 14 marks, which is for me it was very low, and you know, it devastated my whole result. Correct. So I identified it that I needed to work on my drawing more. I thought I was good at it, and I was. But when I see other people, the talented people that come here at CE, it was, you know, an eye opener. I needed to work on it. I needed to work on my weak spots and, you know, make them my strong spots. So
keep your practice continuously for your strong suits, which was aptitude for me, and then I needed to give more time to my weaker sections, which was design thinking. ओके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अचीवर्स से बात करेंगे दे ऑलवेज आर प्रेजिंग मॉक्स टेस्ट ड्राइंग के केस में टाइम बाउंड स्केचिंग क्या ये भी सब कुछ प्रैक्टिसेस थी जो आपने की यहाँ पे और दैट प्लेड अ रोल Absolutely. It's very important. The mocks and the assignments that the faculty gives here, they're very important. And you know, I think that if you don't give these mocks and assignments, you know, continuously and regularly, the exam can overwhelm you. यस Definitely. If you don't give mocks, you know, if you're not habitual to that, the exam format will make you nervous at that point of time. करेक्ट And you know, these mocks are, you know, a very helpful thing. यस सो आई वुड सजेस्ट दैट यूसी जो भी बच्चे प्लान कर रहे हैं मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम क्योंकि जितनी भी जगह अगर आप फ्री रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं मेजरली पीपल आर टीचिंग थ्रू PYPs एंड इसके लिए नया कंटेंट जो डेवलप हुआ टीचर्स ने दिया आई थिंक दैट ऑल्सो वॉज अ की रोल था उसका बच्चों को अच्छा Yes. यूसी प्रिपरेशन के लिए क्योंकि कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस दे पाए हम आपको PYP के बियॉन्ड Yes. जाके कुछ नया प्रिपेयर किया हमने Yes. तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट थिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं अभी आई वांट यू टू give some suggestions some advice to students who are aspiring to give these exams in near future what should be their line of action Okay, so I feel like you need to surround yourself with people who support you and not let you down. The students that come here at Creative Edge, they're very talented and very inspirational, of course. And I was inspired by a lot of people here. I used to mingle with them. I used to see every other person's drawings, and you know, that's a very key inspiration for me correct to motivate myself to do more, to become like them, to become more than them, because they're also the competition. So yeah, just be focused towards your goal. Do not get distracted. You know, this is like one of the most important phases of your life. You need to realize that, and you know, just do not waste your time. The time is very precious, and yeah, just stay focused and stay motivated. जैसे दीक्षांत ने बताया कि इसने अपने पीयर ग्रुप से अपने फ्रेंड्स से दो ही सॉ देम ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स बट उनसे भी सीखा तो मैं आपको बता दूं डिज़ाइन एक ऐसी स्ट्रीम है जहां आप एक फैकल्टी से कहीं गुना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप से सीखते हैं बिकॉज एवरी स्केच एवरी डिज़ाइन टीचेज यू मोर थैंक यू दीक्षांत फॉर शेयरिंग ऑल द ग्रेट थिंग्स दैट यू actually practiced, did and reached here. All Thank the you so best for much, your ma'am. future Thank you. and stay in touch. Thank you.